As per the discussions earlier, we have started our chapter journal. You all know about the performer of journals. Now these are the things that we will be writing up. First one is date, the date of the transaction on which it takes place. That means any transaction is there, you have to write your transactions day wise according to the date in chronological order. In column of particulars, the name of the account to be debited is written first. So whatever we will be writing, debit will be written first and name of account to be credited will be written in the credit side. Okay. So in particulars, firstly we'll be writing up debit, and then whichever account is to be credited you will be writing in the credit side. So सबसे पहले debit लिखा जाता है, then we write credit, and at the last of particular transaction you will be narrating it. Narrating means writing some summarized thing about the transaction. Then we have ledger folio. It is actually the page numbers on which various accounts appear in the ledger. So after preparation of journal, you prepare ledgers. So ledger and journal must be matched. तो ledger का जो paper होगा, that page number will be written in the journal's ledger folio, so that if you want to tally your transaction, तो आप journal का जब book open करें, journal के page से when you will be which page of ledger to be opened, आप उस ledger folio को easily open कर सको. So it is simply writing the page numbers in journal. और ledger folio में, ledger में जब आप जाओगे, then journal number will be there. Okay. Then is the column of debit amount, in which any account which is to be debited, you will be writing like this. The amount to be debited against the debit. DR is the short form of debit account, which is written along with the nature of currency. जैसे हम लोग rupees में लिखते हैं, so debit amount will be written in the debit account and credit amount will be written in the credit account. Now just see this again. Date, particulars, ledger folio, debit amount. अगर कोई account debit है, debit will be written first. If anything is credited, credited will be written afterwards. So these are some of the explanation of date, particular, ledger, folio, debit and credit. Then your work starts with journalizing. How to write your transaction in journal. This is it can comes in your MCQs, which is a systematic act of entering the transaction. So it is journalizing. Journalizing, it is also called like day book. आप event wise लिखते हो, आप date wise लिखते हो, right? Now at the time of journalizing, आपने जब transactions को लिखना है, आपको क्या चीजें अपने mind में रखनी है? That is, when an account is debited, जब आप किसी account को debit करोगे, उसको कैसे लिखोगे? DR. DR is the short form of expressing that you are debiting your account. And when you will be crediting anything, you will not be writing DCR. It is not like that. You will be writing TO2. That means account is debited to this particular account. Okay. So these two terms are very, very important. One is DR, that is debited, and one is to, that is, it stands for that you have credited something. Okay. Now next we see that how to journalize the steps. अब आपको करना क्या है? Simply when we will be reading up any transaction, you have to find out that which account is debit, which is credit. अब debit and credit is very, very clear to you all, right? Now this is clear that which account is to be debited, and मुझे debit कैसे calculate करना है, how to calculate credit, which account is debited, which account is credited. You have the list of that. Now in this list,
you have to see that nature of account is what. Nature of account means whether it is personal, whether it is real, whether it is nominal. This is what we call it as nature of account. Which nature is being involved in it. ठीक है. एक फर्स्ट वन इज यू हैव टू कीप इन माइंड कि अकाउंट कौन सा है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है. उसके बाद आपने ये देखना है कि जो अमाउंट लिखी गई है वो डेबिट हो रही है या क्रेडिट हो रही है. लाइक कैश, कैश वी ऑल नो इट इज रियल. नाउ यू हैव टू सी व्हाट कि कैश जो है वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट. मींस वेदर कैश इज कमिंग इन, अगर कैश बिजनेस में आ रहा है then we will calling it as it is being debited. If cash is going out, that means cash is real account. Uska nature of account is clear that cash is real. Now we have to apply the rule. That rule is debit or credit. So this is what it is written. First we have to find out what accounts are involved in the business transaction. First of all क्या करना है, आपने find out करना है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है. कैश है, कैपिटल है, राम है, श्याम है. फिर हमने ये देखना है उसका नेचर क्या है. नेचर मींस टाइप क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब वो रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है. थर्ड पॉइंट इज आपको रूल अप्लाई करना है. इफ इट इज पर्सनल, तो पर्सनल में वो डेबिट है या क्रेडिट है. This is what you have to see. Golden rule to apply. Like Ram is to be debited or is to be credited. Ram is receiver or Ram is giver. One time, one person in the transaction can be written in the one side only. मतलब राम एक टाइम पीरियड में, मतलब अगर मैं कुछ, let's suppose I am investing something. So I can invest, मतलब I can invest and I can be the giver. तो मैं एक टाइम पे क्या हो सकती हूँ, सिर्फ गिवर हो सकती हूँ. That means if I am giver, तो मैं कहाँ लिखूंगी, I am to be credited. My name is to be credited. So one टाइम पे, एक टाइम पे एक पर्सन या एक चीज वो या डेबिट हो सकती है या क्रेडिट हो सकती है. लाइक यू हैव परचेज्ड फर्नीचर, तो एक टाइम पे जो फर्नीचर है वो डेबिट होगा. क्यों? क्योंकि फर्नीचर आपके बिजनेस में इन कर रहा है, वो आ रहा है आपके बिजनेस में. दैट मीन्स फर्नीचर विल बी डेबिटेड एट वन मोमेंट. ओके, इज इट फाइन? Is it fine to everyone? Yes, ma'am. Okay, fine. Just mute yourself. Okay. Now find out what account is to be debited and which account is to be credited. अब आपको ये find out, आपको ये तो पता चल गया जी, transaction में there is Ram and there is cash. या दूसरी transaction है there is furniture and there is cash. Now furniture and cash, you both come to know that these both are real. Now you have to find out कि furniture debit होगा या cash debit होगा. So for that you have to apply rule. Now fourth step is to find out which account is to be debited and which account is to be credited. Something which is coming in will be debited, something which is going out will be credited. Okay. Then last one is when you have understood all the concepts, you have find out the account, you have identified that which nature of account it is. Now you have applied golden rule to it. Then you come to know about which will be debited and which will be credited. Then last step turns out record the date of transaction. आपको date find out करनी है और उसको date column में लिखना है. Then you will be writing up. Fine. Then you have to complete your columns. फिर आप particular column में सारी details लिखेंगे. Then you will be recording all the transaction. Now your main work starts here. How to record it. आपको लिखना कैसे है इसको, आपको डेबिट कैसे लिखना है, नेक्स्ट लाइन कैसे लिखनी है. सो दिस इज it's a big task which you have to do and you have to complete your account. So after that your narration will be written and then you will be particularly drawing one line to differentiate कि मेरी ये एक transaction complete हो गई है. Then you will be posting. उसके बाद
Till this, is it fine? Now see this illustration. This is how your questions will be given to you. ऐसे आएगी आपको क्वेश्चन, ठीक है? अभी हम इसको स्ट्रेट में लिखेंगे नहीं. Just see this, that journalize the following transaction in the books of Mr. Ram Krishna. Now this is how you, these are all transactions. ये सारी events हैं जो आपके business में जुलाई 1 से लेकर जुलाई 30 तक होती हैं, ठीक है? नाउ यू हैव टू राइट, वी आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट कि जो जुलाई 1 को मेरी इवेंट हुई है उसको मैं सबसे पहले जर्नलाइज करूंगी, देन जुलाई 4. ऐसे नहीं है कि मैं जुलाई 1 के लिखने के बाद जुलाई 11 लिखूं, देन अगेन जुलाई 4, देन जुलाई 5. इट इज नॉट लाइक दैट. whatever is written you will be writing chronologically. Okay, so this is how your question will look like. या आपको इस तरह से डेट भी गिवन होगी. इफ डेट इज नॉट गिवन यू विल बी सिंपली राइटिंग 1 2 3 4. ओके, अदरवाइज इन रियल सिनेरियो डेट्स आर देयर. देन पर्टिकुलर्स, इसमें आपके पास ऑल द ट्रांजैक्शंस इवेंट्स आर बीइंग मेंशन्ड. उसके बाद कितने रुपीज अमाउंट विल बी गिवन टू यू. दिस इज हाउ your questions or transactions will be given to you in your questions. With this, with the help of these kind of all date, particulars and amount, you will be journalizing your transactions. So आपको सबसे पहले your first step is to frame your format. I'm just moving towards next. ये देखो, this is how your register page will look like. You can see date is there, ये आपका फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स आर गिवन, लेजर फोलियो इज गिवन, अमाउंट इज गिवन, अमाउंट क्रेडिट इज गिवन. जस्ट सिंपली फोकस ऑन दिस फर्स्ट ट्रांजैक्शन. आपको अभी सिर्फ ये समझना है कि कैसे करना, कैसे इसको लिखना कैसे है. देखो, 1 जुलाई इज गिवन, इट इज योर डेट. ओके, देन यहाँ पर उसने डिटेल लिखी है, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा. ये जो आप नीचे लाइन देख रहे हो 3rd नंबर पे, दिस इज व्हाट वी कॉल एज नरेशन, जहां पे लिखा है बीइंग स्टार्ट ऑफ बिजनेस बाय मिस्टर राम कृष्णा. दिस इज, वी कॉल इट एज नरेशन. नरेशन इज can be defined as in which we explain about the transaction कि हुआ क्या, that being start of business by Ram Krishna, कि राम कृष्णा ने business start किया. With this narration you come to know about the transaction कि वो transaction किस चीज की है. Now see this, cash and capital. मैंने आपसे कहा था डेबिट के लिए you will be using word debit और जो अमाउंट होगी उसको आप लिखोगे डेबिट साइड में. देन जो क्रेडिट में लिखनी है आपको अमाउंट, फॉर दैट यू विल नॉट बी राइटिंग क्रेडिट, यू विल बी यूजिंग दिस वर्ड टू. इज इट फाइन? आई रिपीट, अभी मैंने आपको ट्रांजैक्शन कैसे की ये नहीं बताया, अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है हाउ टू राइट इट. लिखना कैसे है दैट विल बी डिफरेंट. What are the things to be taken care of that I am discussing. Date, जो डेबिट में होगा उसको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना आपने आगे. कैश अकाउंट पूरा डिफरेंस देना आपने, देयर विल बी स्पेस, देन एट द एंड यू विल बी राइटिंग डेबिट. लेजर फोलियो कॉलम को अभी आपने कुछ नहीं लिखना है बिकॉज यू आर नॉट अवेलेबल विद द लेजर पेजेस, सो ये कॉलम आपका ब्लैंक रहेगा. देन in very straight way in front of this amount will be written. आपकी डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों सेम होती हैं, सेम होनी चाहिए. ओके, देन टू कैपिटल, ये क्या है क्रेडिट. अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, बिल्कुल सम ऑफ द मिडल में से स्टार्ट होगा. क्रेडिट साइड थोड़ा इसको स्पेस पहले देनी है आपने. देन यू विल बी स्टार्टिंग अप इन द नेक्स्ट लाइन टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट विल बी रिटन फर्स्ट, credit will be written next. In the next line you will be writing to capital account. credit को express करने के लिए you have to mention this to word, to, to capital account. Just see it's all blank.
You are not supposed to write in the column of debit. You will be writing in credit side, that is 2 lakh. ये दोनों amounts same है. Now I'm just explaining this. Now this is time to understand how we can differentiate it, how we can write it. Just see. You can see your 1st July transaction क्या दिया आपको? Mr. Ram Krishna. It is what? He is person. Okay. He is person, that means personal account rule will be applied. यहाँ पे आप underline करोगे and you will be writing P, that he is the person. Ram Krishna started business with cash. उसने क्या किया? Business start किया. कैसे? Cash से start किया. How much? 2 lakh. राम कृष्णा ने 2 lakh से business start किया with cash. Okay. Now we have to see which is to be debited, which thing is to be credited. Who is Ram Krishna? Ram Krishna is receiver or giver. Anyone can unmute themselves and just tell me whether he is giver to the business or he is the receiver of the business. Anyone, just quickly. Yes. Okay, your second is goods purchased in cash. So Yes, ma'am. goods are real, cash is real. Just anyone speak rule of real account. Anyone out of you just speak out rule of real account. Debit what comes in, Yes. credit what goes out. Okay. Now, Star, you tell me what is coming in. What is coming in? Goods. Goods are coming in. That means goods will be debited. And what is going out? Cash. Cash is going out. So cash will be credited. Now see the transaction. How they have written it. ओहो, ये इतनी आगे कैसे चला गया? Just see. परचेज अकाउंट, आप ये बेटा परचेज भी लिख सकते हैं. गुड्स का मतलब होता है, ये डिफाइंड नहीं है कि तुमने गुड्स में क्या परचेज किया. तुमने फर्नीचर परचेज किया, तुमने कुछ पेटेंट्स परचेज किए. नथिंग इज मेंशन्ड. व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड यू कैन राइट गुड्स और यू कैन राइट परचेज अकाउंट. ओके, इफ नथिंग इज मेंशन्ड. So purchase account debit 20,000 and cash is going out to cash account, that is 20,000. So purchase account is debited, cash account is credited. 20,000 and 20,000 being purchase of goods in cash. Any doubt in this transaction to anyone? No, ma'am. Okay. Because in this account, why it is simple? Because in this account, only one account was associated, that was real. ठीक है, सिर्फ रियल अकाउंट था, तो आपने सिंपल फटाफट से रूल अप्लाई कर दिया दैट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आपका गुड्स बिजनेस में आ रही हैं तो वो डेबिट है, कैश बिजनेस से जा रहा है तो वो क्रेडिट है. तो दिस इज क्वाइट सिंपल एंट्री. नाउ सी द थर्ड वन. He deposited in bank. Who deposited? Person. Who is the person? ये जिसका बिजनेस है वही तो बैंक में जाएगा ना डिपॉजिट कराने. बैंक क्या है? What is bank? पर्सन है, रियल है, नॉमिनल है, क्या है? Real. No. Real. Artificial person. Nominal. Person. It is Personal. person and artificial person है ये. ठीक है, we have to keep in mind person में natural person है, artificial persons हैं and representative persons हैं. So bank is your artificial person. Your educational institution is your artificial person. Now see, who is the receiver?
बैंक इज द पर्सन, यस. अब बैंक रिसीवर है या गिवर है? बैंक इज Receiver. रिसीवर. तो आप रिसीवर को डेबिट करेंगे. बैंक इज द रिसीवर एंड रिसीवर इज टू बी डेबिटेड. बैंक अकाउंट डेबिटेड. नाउ फ्रॉम योर बिजनेस व्हाट इज गोइंग आउट? Cash. Cash is going out. So cash will be credited. You got my point or not? So Yes, आपके ma'am. इस पर्टिकुलर अकाउंट में क्या हुआ? पर्सनल एंड रियल बोथ अकाउंट्स वर यूज्ड. बैंक इज द पर्सन और बैंक में पर्सन, बैंक एज अ पर्सन कौन सा रूल अप्लाई हुआ है उस पे? दैट बैंक इज द रिसीवर. एंड कैश रियल है, रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड कैश इज गोइंग आउट. तो हमने उसमें क्रेडिट, तो वन थिंग विल बी डेबिटेड एंड अदर थिंग विल बी क्रेडिटेड. तो हमने ये जुलाई 5 में 40,000 की एंट्री पास आउट कर दी. 3 एंट्रीज आर क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay. Yes, So, ma'am. okay, fine, that's good. Now goods sold. Okay, less than 1 minute is left. All will join again with the same link. Okay, ma'am. That's good. So goods sold 15,000. आपकी goods हैं. Goods are your assets. And goods, what we call it as? आपका real है, personal है, nominal है. What it is? It's Real. real. Goods are real and they are being sold. तो goods के बदले में क्या आएगा आपके पास? Cash. Cash. कैश आएगा ना.